the last 30 days per week, at least I used to do it like on the day exam of JEE. Mistake I have ignored. So hello everyone, welcome to the Nicolate. We have Ishita with us who got 98.4% and JEE Mains 2025. And तुम्हें exactly आखिरी के दौर में क्या क्या चीजें करनी है, exact strategy जो कि तुम्हें follow करनी होगी, जो कि अगर तुम्हारा preparation अच्छे से नहीं हुआ है, so she will guide you entire scenario कैसे तुम्हें exactly preparation करनी है in the last days. So welcome Ishita. Hello. Okay. So I started preparing for my JEE in the 11th summer holidays. Till then I was always into some extracurricular activities and all. So in the 11th journey, the summer holidays, I have taken coaching from Physics Wala. It's an online coaching, and there I've covered all the 11th syllabus. I've tried to cover, but it was very difficult to cover all that in 1 month. So I had to carry it in the 12th also, managing 12th and 11th syllabus in the 1 year. And then I have given mock tests a lot and many DPPs that help me enrich my practice. Okay. So can we say that कि आपकी जो 11th थी kind of थोड़ी weak थी? हाँ, true. So जब 12th में आपने आया तो कैसे manage किया? So my school timings were from 9 to 4. Okay. So I had no other work except that. Even in the school times, I had like games periods and all that. So in the 12th, I used to sit and do, in the games periods, I used to sit in the classroom itself and then take my 11th class जो modules देते हैं, वो modules, and I used to solve that. Okay. So just I had like a brief, थोड़ा थोड़ा पता मुझे, मैं कर सकती हूँ. So एग्जैक्ट अभी जो स्टूडेंट्स जो कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं एग्जैक्टली उनके पास 30 डेज एग्जैक्टली बचे हैं. सो व्हाट वाज एग्जैक्टली जी रूटीन, उस टाइम पे डेली रूटीन आपका क्या होता था 30 डेज से पहले? किस तरह से मॉक टेस्ट देना है, किस टाइम पे रिवीजन करना है, एंटायर डे को आप कैसे शेड्यूल करते थे? तो आई वुड सजेस्ट कि इन द लास्ट 30 डेज आप लोग मॉक टेस्ट दें, मतलब जितना मॉक टेस्ट हो सकता है उतना. मैं ऐसा करती थी कि लास्ट 30 डेज पे मैं कुछ नया सीखती नहीं हूँ. जितना मुझे आता है, मतलब try to cover it before 30 days only, not it like you're sitting in the last 30 days and trying to cover the whole syllabus. Just in the last 30 days per week, at least I used to do it like for every 3 days I used to give a mock test in the last 30 days to test my accuracy, my time management, or let's say because I'm the girl who made silly mistakes. So I will just check in the last 30 days कि मैं कैसे कर रही हूँ, and you have to maintain a separate notebook कि like analyzing each and every mock test कि मैंने इस formula, I did not remember this formula, or I have done silly mistake here, या I'm doing calculation here. You have to write it down, and in the other 2 days you have to analyze it so that in the next mock test I won't repeat that. Okay, so next मॉक टेस्ट देने से पहले एग्जैक्टली जो हमने पहले मॉक टेस्ट दिए उसको एनालाइज करके जो भी मिस्टेक्स हैं उसको नेक्स्ट मॉक में उसको अटेम्प्ट नहीं करना, किसी भी तरीके से मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए. सो समथिंग मैथमेटिक्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है. लास्ट में अगर मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए या फिर नहीं, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर नंबर ला के भी 99 या फिर 98 के करीब पहुंच सकते हैं, कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आई एम पर्सनली नॉट ग्रेट एट मैथमेटिक्स. आई एम compared to physics and chemistry, I'm a little slow in mathematics. So what I have done is concentrated on the higher weighted chapters. So for example, like I can say those matrices, determinants and all that, vectors, 3D, all that, sequence series. Sequence and series. So I have done those especially, and the rest of the chapters I had practiced for my CBSE boards. So that helped me, like okay, I can manage if the question at least comes, so I can do that. Okay, if the easier question is coming, we can solve it. But you have to be strong at least in one of the subjects. Like physics was my strongest subject. I love physics. So chemistry was okay, I could do. Only the maths thing. So it's a probability. Like if you do good in physics, like if you score a great percentile in physics and a great percentile in chemistry also, maths, even if you get around 60, 70 percentile, that's enough to score all around. You'll get around 90 to 95 to 98. तो इन द लास्ट फेज ऑफ जेईई तो हमें कोई एग्जैक्टली जो एक मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं वो एग्जैक्टली नहीं करनी है आखिरी के दिनों में. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द मिस्टेक इन द लास्ट डेज? So last days is that the same mistake. I have ignored math a lot because I thought let's just leave it and I'll concentrate only on physics and chemistry. But then in the first attempt this happened to me where I got 92 percentile. So then I realized that no, I have to concentrate on math also. Only these two subjects will not
give me my dream percentile. And so that time I have prepared for maths, and still that was very hard because it was the time for my boards also. I had to manage both boards and JEE at the same time during the March and April duration. So that time I had done repeated math problems. I have asked my teachers, my school teachers, to help me out to increase my speed in mathematics and must not commit any silly mistakes. So जेई से एक दिन पहले एग्जैक्टली आपका क्या माइंडसेट था, किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, या फिर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपकी एग्जैक्टली मॉक एग्जामिनेशन में कैसी थी, एंड क्या आपने सेम इंप्लीमेंट किया जेई के एग्जामिनेशन में, या फिर आपने कुछ नया डिफरेंट ट्राई किया था एग्जाम में? नहीं. So how I used to attend my mock papers is like first I attempt physics. क्योंकि after attempting physics I'll be like okay I am able to. How I used to attend my mock papers is like first I attempt physics. क्योंकि after attempting physics I'll be like okay I am able to do, so I'll be in the positive direction. And then chemistry, and then at the last I'll do maths, because physics I used to solve fast and almost of the time I would get correct answers, like I'm confident in physics. So and then chemistry at the last, maths I used to attempt, and that also is like how much I know I would attempt. Okay. That's it. Same thing I have followed for my, and that day also I have attempted physics and then chemistry and then math. The same pattern. Like it depends on which subject you are strong at, which subject you are confident at. Don't think like if you are weak at physics, don't start it, because you may end up being demotivated, like I am unable to do this, what will happen, and all that tension, you will be feared and you may mess up your exam. So don't do that. Yeah, actually I want to add on this point. So basically आप एग्जामिनेशन में स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में वो पोर्शन या फिर वो क्वेश्चंस आपको पिक करने, इधर आपने फिजिक्स भी चूज किया है तो एक्जैक्टली मे बी आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत अच्छा है, तो स्टार्ट करिए आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से, अगर वो क्वेश्चन देखिए वो ढूंढ के, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका रिदम बन गया तो यू विल बी ओके विद इट। अगर स्टार्टिंग में अगर मोटिवेशन अगर ऊपर नीचे दिगमगाया तो मिस कर देंगे आप एग्जामिनेशन में। वी आर टॉकिंग बट अगर एग्जामिनेशन में अगर सेक्शन वाइज बात करें तो आप पर्टिकुलरली आपने अगर किस सेक्शन को, न्यूमेरिकल को पहले अटेम्प्ट किया था या फिर एमसीक्यू में, एंड जो एग्जाम अभी क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक्जैक्टली जैसे असर्शन रीजन है तो उसमें कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं, एंड जो ऑप्शंस करना है तो जिसको क्लिक करना है, कभी ऑप्शन आंसर निकाला भी है बट एक्जैक्टली उसको जब आंसर मार्क करें तो 3 मार्क कर दें, तो जो ये एंजाइटी होती है इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर की वजह से हमें चीज़ें आ रही होती है बट हमने जो एग्जाम आंसर निकाला बट ऑप्शन कुछ और लगा रहे हैं, एंड जब सॉल्व कर रहे हैं आखिरी में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दे रहे हैं, तो ये सारी मिस्टेक को एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड नॉट बी टेंस्ड. अगर हम टेंस्ड होते हैं तो आधा गलती वहीं पे कर देते हैं. So first thing is that you have to be sure, like first think about which concept is applying over there. For example लेते हैं कोई मैथमेटिक का प्रॉब्लम, एसेशन रीजनिंग आ गया है और उसमें हमको सॉल्व करके रिलेट करने को पूछा है, तो थिंक लाइक हमने सॉल्व कर लिया, वी गॉट एन आंसर एंड दैट इज करेक्ट, तो मतलब इट इज आल्सो एक्सप्लेनिंग, मतलब और रीजनिंग में लिखा है व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू यूज इट, सो वी कैन जस्ट थिंक इट इफ इट इज एक्सप्लेनिंग और नॉट, ऐसा मतलब सोच के सही आंसर निकालना है बस. वो इतना भी टफ आता नहीं है, मेरे शिफ्ट में तो इतना टफ आया था नहीं था, तो इट वाज फाइन, you can manage it, but you should not be tensed at that time. If you are tensed and you are overthinking it, then you may get different type of answers. So what answer you have got, you just stick on to that. So what advice would you like to give to the JEE aspirant who are watching this and they are watching around 30 days back? So exactly what they need to do right now? So I first of all understand that the last 30 days will be very packed and your brain will be crushed a lot, but you have to overcome this, you have to face this, you have to bear this. After that you will be free, or you will not be free, you have advance again. So basically you have to give mock tests. It's completely, this phase is, I believe, completely an analyzing phase. Like you have to give mock tests and you need to know where you are exactly, like it's not, you can't even realize now and you just can't prepare again. So it is like just raising your standards wherever you are. Like physics, I said like I like physics, so I used to keep my physics strong. It's not like I'm concentrating on other subject and I'm losing the subject which I'm actually good at. So just keep on practicing and doing mock tests and your short notes, which you have to do it from the starting, just revising all that. That's all, and thank you Ishita for bringing this much entirely good podcast with us. Thank you. All the best.